हेलो गाइस। कैट के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और सब लोग के बहुत सारे डाउट हैं कि मेरे को ये कॉल आएगा वो कॉल आएगा कि नहीं। सो आई हैव स्टार्टेड वन ऑफ द सीरीज जिसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट बे स्कूल। सो फर्स्ट ऑफ द इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आई एम कोजी कोड पीजीपी प्रोग्राम एंड द पीजीपी फाइनेंस प्रोग्राम। इसके बाद उनके पास एलएसएम और बीएम प्रोग्राम बीएल प्रोग्राम भी है, बिजनेस लीडरशिप। सो later we will discuss that, but now the two main focus program is pgp and pgp finance. सो बेसिक आई एम कोजी कोड का जो कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए पहले पिक किया है क्योंकि कोजी कोड का कॉल सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। पीपल फेस लॉट ऑफ डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उनके। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। सो इफ you have scored more than 60% in the graduation, then only you are going to get the call, otherwise there is no chance of getting the call even after scoring 100 percentile in the CAT. एम कोजी कोड जो है वो सबको स्टेज वन कॉल देता है इफ यू आर स्कोरिंग अबव 75 परसेंटाइल इन ऑल थ्री सेक्शंस एंड अबव 85 इन ओवरऑल परसेंटाइल, एंड क्लास 10 12th में 60 होना चाहिए। फॉर ओबीसी इज sectional cutoff is 65 and overall is 75. For SC is 55 for sectionals and 65 for overall. ST and physically handicapped category it's 45 and 55. एंड क्लास 10 12th का भी मिनिमम परसेंटेज उन्होंने दे रखा है। तो जो लोग भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं दे आर गोइंग टू गेट द स्टेज वन शॉर्ट लिस्ट। सो स्टेज वन शॉर्ट लिस्ट का ये मतलब नहीं है कि यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल कॉल। सो स्टेज वन स्टेज टू इज टोटली डिफरेंट इन द केस ऑफ आई एम कोजी कोड। और यहाँ पे वो लोग सबसे ज्यादा क्लियरफुली सुन ले मेरे को कि अगर तुमने कोई भी परसेंटेज 10 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्स का कोई भी एंट्री अगर गलत भरी है कैट में, नाउ इट्स टाइम टू रेक्टिफाई दैट, क्योंकि यहाँ पे भी गलत एंट्री भरोगे आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट या दिस इज द टाइम यू गाइस कैन improve और रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। फिर उसके बाद वंस you have cleared all this basic eligibility criteria, then your score is going to be calculated. So 45% weightage is given to the CAT index. तो CAT स्कोर का 45% weightage है, बहुत हाई है वो। यहाँ पे क्लास 10th को उन्होंने 25% weightage दिया, सो 25% weightage है। क्लास 12th का 15% है, बट यहाँ पे कैविएट उन्होंने ऐड कर दिया। सो फ्यू ऑफ द बोर्ड्स हैवंट गिवन द क्लास 12th actual percentage score, they just given the pass fail or maybe ABC. So यहाँ पे if you haven't got the class 12th score exact score, so that will be distributed across other parameters like cat is in weightage will increase, class 10th score will increase. Then they have a gender and academic diversity score, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। Then we have a work experience score. So क्लास कैट का स्कोर सबको पता है अपना, सो दैट दे विल कैलकुलेट, सो यू कांट चेंज एनीथिंग। क्लास 10th का भी सबको पता है, बट यहाँ पे अगेन उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया दे आर गोइंग टू टेक द स्कोर्स फ्रॉम ऑल द बोर्ड्स फॉर लास्ट 3 years एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल गोइंग टू कैलकुलेट योर स्कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि आईसीएससी वालों का स्कोर 99 आता है क्लास 10th में या सीबीएसई वालों का ज़्यादा आता है, बिहार बोर्ड का कम आता है, तो उसकी वजह से कुछ मतलब वो होगा, डिफरेंशिएशन होगा या उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा बिहार बोर्ड का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड से वो डायरेक्टली स्कोर्स ले लेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल कैलकुलेट योर स्कोर्स और मे बी परसेंटाइल व्हाटएवर दे यूज। Then we have a gender and academic diversity. So suppose you are coming, you are a female or a transgender, then gender diversity में you are going to get straightforward 10, otherwise it will be 0. So if you are a male candidate, तुम आपका gender score 0 होगा, and if you are coming from a technology or engineering background, then again your academic diversity score is going to be 0, otherwise it will be 5. So if you are a female or transgender and non-engineer or non-technology background, then straightforward 15 marks इसमें मिल जाएगा। Then we have a work experience score. Work experience score में यहाँ पे भी थोड़ा सा improvement है। So in case कैट के स्कोर में हमने जो वर्क एक्सपीरियंस भरा था वो 31 जुलाई तक भरा था, नाउ इट विल बी कैलकुलेटेड थे 31 December।
सो सबको ध्यान रखना है, लोग जल्दी में आके 31 जुलाई वाला ही भर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कैट में तो मैंने 24 मंथ लिखा था, तो यहाँ कैसे। बट नाउ हियर द चांस यू गाइस कैन चेंज योर वर्क एक्सपीरियंस। पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और अपने फादर मदर के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, दे हैव स्टार्टेड समथिंग ऑन देयर ओन, so they need to give some specific documents. So they have given the list of 5 documents. In case you want to show that, then registration, registered partnership deed, MCROC, firm registration certificate, GST registration of firm, firm's audited statement, DIPP certificate of recognition. इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, राइट। फिर फाइनल शॉर्टलिस्ट कैसे आएगा? सो स्टेज 1 का शॉर्टलिस्ट आएगा, फिर बेस्ड ऑन दैट कॉल आएगा, फिर इंटरव्यू और वैट में आप लोग अपीयर करोगे, रिटन एबिलिटी टेस्ट, देन यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल शॉर्टलिस्ट। फाइनल शॉर्टलिस्ट विल बी हियर योर इनिशियल शॉर्टलिस्ट में जो 45% वेटेज था कैट का, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू 35%। पीआई स्कोर इज 35%। सो कैट का जितना वेटेज है उतना ही पीआई का भी वेटेज है। सो हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन दोज 30-40 minutes और 5-10 minutes of your interview, that is going to decide a lot. VAT score is 20%. So यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा डाउट करते हैं कि वैट का उतना वेटेज तो होता नहीं, तो वाई शुड आई फोकस। सो इफ यू add VAT and PI, that is coming around 55%, because CAT का score you can't change, now resume score you can't change, 45% तो you can't change, but 55% you can still, you have in your control and you can change it well. So now coming to the resume score. So resume score के लिए उन्होंने clearly criteria दे दिया है. So in case you have done your undergrad degree from the institute which are listed in the below top, like in the top 30 of the NRF 2023 ranking, then you get a score of 4. Otherwise, it will be 0. So if you are from IIT or NIT or some premier graduation college, then you are going to get the score. Professional certification में उन्होंने, if you are a qualified CA, CMA, CS, then you are going to get the 4 out of 4. Otherwise, it will be 0. CFA level वालों को भी यहाँ पे एडवांटेज है. If you are a CFA level 1, 2 or 3, then 4 marks you are going to get. Otherwise, it will be 0. So this is the criteria for PGP, their PGP core program. Again, I am going to discuss about the PGP Finance. PGP Finance और PGP के placements common होते हैं, so there is almost no difference. If you are neutral, I'll say, if you're not hating finance, then you should apply for a PGP Finance also, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, प्लेसमेंट्स कॉमन है. आई नो पीपल who has cleared PGP Finance, and lot of them, or the people whom I know, they are working in other domains also. So PGP Finance करके भी ये जरूरी नहीं है कि you are going to work in a core finance profile. So PGP Finance is also very good option. So again, you need to score 60% and above in the graduation. That is the basic minimum eligibility criteria. और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे कैट के साथ जीआरई और जीमैट भी एक्सेप्ट करेंगे. सो इफ यू हैव स्कोर्ड वेल, यू हैव अ गुड वैलिड स्कोर ऑफ जीआरई जीमैट. सो जीमैट में अगर 690 और 700 प्लस है या 710 है, देन यू शुड अप्लाई फॉर अ पीजीपी फाइनेंस प्रोग्राम. बट यहाँ पे क्यूए का वेटेज 85 है, बट वर्बल एबिलिटी का 70 है. फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी इट्स 75, 70 एंड 65. For SC it's 65, 60 and 60, and for ST PWD 60, 55 and 55. So अगर जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, the person is going to get the EOI form. यहाँ पे फर्स्ट राउंड कॉल नहीं आती, यहाँ पे EOI, आर यू इंटरेस्टेड इन द पीजीपी फाइनेंस प्रोग्राम. बिकॉज लोग चूज तो कर लेते हैं कैट का फॉर्म भरते वक्त, बट वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. सो EOI का फॉर्म आएगा आप लोग को. इफ यू शो योर इंटरेस्ट, देन यू विल बी कंसिडर फॉर अ नेक्स्ट राउंड. Then shortlisting. So here again 40 पर जो इनिशियल VRC का जो केवल शॉर्टलिस्टिंग में यूज होता है, इफ यू आर क्लियरिंग दैट कट ऑफ, दैट इज फाइन. बट इफ यू हैव स्कोर्ड वेल इन QA एंड DI सेक्शन, देन 20% इज गोइंग टू बी गिवन टू दैट. बस यहाँ पे एक कैच ये है कि क्लास 10th का स्कोर पीजीपी में 25% था, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू 10% फॉर द पीजीपी फाइनेंस. क्लास 12th अगेन इट्स 15%, सेम एज पीजीपी. Work experience score is 10%. PGP finance suitability score, that I'm going to discuss later. And for the PGP gender diversity score, it's 5%.
So if you are scored well in Q and DI section, if you have a good class 12th score, BGP suitability score, if you have, I'm going to discuss, then you should apply for a PGP Finance. If you have any doubt regarding filling the PGP Finance, or if you want to prepare for PGP Finance interviews, you can drop a comment. I'll be happy to help you. Here again, they are going to take the score of last 3 years from your board. Work experience wise, again, cat asks for till 31st July. Here it will be considered the 31st of December, so that you need to take in mind while filling the form. So here is the PGP Finance Suitability Score. If you are a CA Inter first group clear, then you are going to get the 2 marks. CFA level 1, FRM level 1 and PRM exam 1 is again going to get 2 marks. 4 marks is for the CA Inter both groups cleared. So people who are appearing for CA, so they will be having a fair idea that what it means. Then we have a CA final, only first group is cleared, then you are going to get 6 marks. CFA level 2, FRM level 2, PRM exam 2, again 6 marks. If you have cleared both the groups in CA final, or you have already become the CA, then again you are going to get the 8 marks, or CFA level 3 also gets you the 8 marks. I hope everyone is clear. Gender diversity यहाँ पे थोड़ा सा कम है. In PGP is 10% now, but PGP Finance is just 5%. Academic diversity भी यहाँ पे नहीं है. So please keep this in mind कि academic diversity जो वहाँ 5% होती थी वो यहाँ पे नहीं है. Final shortlist. So PI score is 35%. So PGP Finance में PI score is giving you the highest score 35%. VAT is 10. So PGP में 20% है, यहाँ पे 10% है. QA का स्कोर 15% फाइनल देगा एंड DI का 15%. वर्क एक्सपीरियंस स्कोर, so 10% of that is going to be included in your final selection or final call, and then PGP Finance suitability score. I hope everyone will be clear. If you want to start your preparation for GDPI, you can call, you can drop a comment on this video. We will be happy to help. So these are few of the scores. So you can have a look on, this is available on the IIMK website. And if you need any help, or if you want to start your GDPI prep, just drop a comment on this video. We'll be happy to revert on that. Thank you.